Indian coach of Pujara, Lisa Sthalekar, former Australia's women's cricket captain and commentator, and Dinesh Lad, childhood coach of Rohit Sharma and Shardul Thakur. They will all be in conversation with the authors Boria Majumdar, a sports historian too, and Kushan Sarkar. Before I invite Boria to take this evening forward, may I remind you all to send in your questions for the Q&A segment at the end of the session. 5 questions win gift vouchers from Tata Click. See you on the other side of the conversation. Yeah? Thank you very much. Thank you very much, Rima, and thanks again, Tata Literature Live, all of my colleagues at Tata Literature Live, Harish, Rima, Amy, Atul, and of course, Jaya. Saurav, Mission Domination started with you. In a sense, it started with you, 2001, that Australia series, then England, then Australia. Now it's almost coming a full circle. You were there at Lord's. You were celebrating with the team at Lord's. Now, thoughts on what's going on, the current Indian Test team. You've tweeted saying we are miles ahead. Your thoughts? I think we've been playing well. Let's be honest. The win in Australia, especially in Brisbane, was a very remarkable chapter. To come back from behind and chase 340 odd on the last day of a Test match in Australia. It's never happened. And especially when in the last Test we were just picking players to see if we can make an 11 because of injuries and COVID and everything. So I think that's why it makes it more special. We've been terrific in England as well. Hopefully we can get the Test match through in Oval tomorrow, because in Manchester tomorrow, because there is a bit of COVID scare there as well. So we've got our fingers crossed and hope we can get past that and play tomorrow, but we don't know at the moment yet. There are tests being done and hopefully everything will be fine. But I think this team has been remarkable. It's a change in Indian cricket over the years. It started when I played in 2000, and for us winning away was the most important thing. I don't know whether all of you, I'm sure all of you remember, Lisa remembers that in 2003, it was probably one of the most remarkable series in Australia, and that Australia, I mean to say, and the sleeper likes of the greats in that tour. So that's been a journey for Indian cricket, and that's been a mission where we would want to play well away. Very happy with Australia, very happy with England, and hopefully we can finish off well. The other question I wanted to ask you, Saurav, because Lisa's there. I mean, we've now seen our girls play Test match cricket. So Mission Domination for our girls. I mean, I know you were personally responsible, in touch with the England Cricket Board to get that series organized during your heart issue. You were doing that from home. You were instrumental in pushing the Test match agenda. Now our girls will play another Test match. So how important is this, Test matches for our girls going forward? Because another World Cup, Women's World Cup for 50 over cricket is coming up early next year. So that's another Mission Domination we are equally invested in. Your thoughts on that? I'm a huge supporter of women's cricket, and Lisa will be happy to know, because they have all started it. She and her team and the English ladies and the Indian ladies have fought hard to get women cricket on the map. And I am telling you, we in BCCI, when we speak to various sponsors and various people who are engaged, they really want to look after women's cricket, which is a great sign. I don't know whether Lisa and all of you are aware of it. They really want to be involved in the women's cricket. We had the IPL last year for the first time. We had standalone sponsorships for the IPL, and it's just going to move forward from here. And I am a huge supporter of Indian cricket. I feel, India should be playing as much cricket as Australia and England are, because that's how Australia really take their women's cricket seriously, and that's how they have improved. And we'll see the same thing with us in the times to come. And I see a bright future in women's cricket, and that is why me and my colleagues at BCCI really pushed it hard in spite of all the obstacles of COVID. It's very tough scoring Australia. It's not easy because of the COVID rules in the country at the moment. They're probably tougher than anywhere else in the world. And to be honest, the boys, when they went last December, and now the girls who are already in Australia, have really sacrificed a lot to get the things. My thanks to them, and I hope it's going to be another good series. It's got a day-night game. Then the schedules have got shifted here and there so many times based on the COVID issues, based on the lockdowns in Australia, and ultimately, finally, we are in Queensland.
them to take that series forward. So hopefully we can finish it off on a good note. One more from me before I get Kushan in, and then we'll let you go, Saurav, because I know with the COVID in Manchester, with conflict of interest issues, etc., your hands are full. Our team was announced yesterday. That's also another mission for you, Mission Domination as board president, looking into the World Cup. How hopeful are you? You were part of the selection. I know it was part of your vision. How confident are you about the team you've given us going into the World Cup? Because that's something that we need to win. 2013 on, we've not won an ICC event. That's, I know, something very dear to your heart. So how happy are you with the team? How confident are you that we can do well in the World Cup? Well, India is always a good team. India will always play well in the World Cup. Obviously, it's in nobody's hands and nobody can guess whether they're going to win or not. It's the same with all teams, whether it's Australia, England, or South Africa, or the West Indies, or anybody, to be honest, Pakistan, Sri Lanka. You never know what happens in big tournaments. Every time India goes to play a World Cup, and for that matter, whether it's Australia or England, there's an expectation of winning. So when we pick the team, we pick the best possible team to win it. It's the captain and the coach and the vice captain selected the job. I am on the other side now, because when I've gone through the times where I would sit and pick teams for World Championships and World Cup captain. But as I said, you expect India to do well, and we got our fingers crossed. It all matter to the knockouts, the semis, and the final. Okay, so here's the book. I wanted to show you all. Saurav also has a copy. I had last week had the opportunity of meeting Saurav. He has the copy there. It is with him as well. Kushan's copy is there. Lisa, your copy will be couriered. Dinesh ji and Arvind ji, आप लोगों को copy भेजा था, शायद मिला होगा, क्योंकि आप लोगों को copy मैंने courier कर दिया था. Thank you very much, Saurav. Kushan, your question to him before we let him go and we get on with our panelists. Well, yeah, Kushan. Yeah. I can hear you. Yeah. My question is, Dada, which are the two players particularly you would be looking forward to? I'm asking a former Indian captain, not the BCCI president. Like, which are the two players you'll be looking forward to in this T20 World Cup, considering the pitches and the conditions? It's very hard to pick two players because there's so many around the world who are just top class players. There's Rohit Sharma, there is in T20, there is KL Rahul, there is Pant, there is Kohli. The way Boria bowls in T20. Hardik Pandya, if he gets going, he can turn it on his head. Go to other countries, Australia, Warner, Maxwell, the quicks in all those three quicks. Mitchell Starc, I don't know whether Mitchell Starc is a part of the Australian squad or not. So there are fantastic players around in world cricket. You go to England, the current World Cup winners, there are some game changers in Butler, Bairstow, who are different players in the one-day format or in the T20 format, Pearson Roy. And then comes the West Indies boys. Anybody can turn it around. Anybody can turn it around. You see the likes of Pollard, Hetmeyer, Chris Gayle, I don't know whether he's part of the West Indies squad, even at the age of 42. So there are a tremendous amount of cricketers in this format around the world who would make a difference. Rashid Khan of Afghanistan, he can turn things around with his bowling. Akibul Hassan, Bangladesh. There's some great players around in this format, and you just have to see who plays well. So I'll let you go, Saurav, and I will get on with my panelists. But before that, I got to say this: Saurav is going to start the IPL off in the United Kingdom, in the UAE, and then he's actually got some great duties to do. He's taking his daughter to the UK to get her settled in her university, and he tells me on the 25th he's going to watch Cristiano Ronaldo. So I'm envious of that. He's going to watch Cristiano Ronaldo take field for Manchester United. That is something he's equally looking forward to doing. Lisa, your final question to Saurav before we let him go. I guess the question to you, Saurav, is, what does the next year mean for BCCI? What are the big projects or the big things that you're wanting to tick off in your position as president?
First, if I can get the COVID out of the world, we're fed up of it actually. Bit like We're all all- absolutely fed up of it, and all of us are fed up of it. You must be fed up of staying in bubbles. Yes. So and doing quarantines all the time. So we have the two new teams in the IPL. We have the new ITT out for it. Then we have broadcast deals out. The FTP is pretty much taken care of, isn't it? So they just keep coming one after the other. We've got some new rules in the domestic cricket, new system in the domestic cricket, and then to your country for the World Cup in 22. So cricket has great calendars throughout the year, and we are looking forward to it. Thank you very much, Saurabh. I'll let you go. And once again, obliged and grateful for your time. Thank you for being there, as always, and sort of formally unveiling Mission Domination. As I said, it started with you. Hopefully, we will see a test match tomorrow. Hopefully, we will see Rohit and Shan stand out, and Arvind ji, Dinesh ji, and all of us will celebrate. Thank you very much. Thanks, Saurabh. Thanks for being with us. Thank you so much. Lisa, coming to you. I mean, we celebrate the men's team. What is the vision of the women's team? How do you see the women's team? Before I go to Arvind ji and Dinesh ji, how do you see the women's team? How talented do you think they are? Can they also aspire to Mission Domination? They absolutely can. We've seen, the fact that the last two ICC events, the 50 over World Cup in 2017, India was in the final. 2020 T20 World Cup, they were in the final against Australia. So they're certainly contenders when you talk about the top nations within women's cricket. I certainly feel, and this is probably what happened in Australia, the Australian women's team kind of fed off the Australian men's team. Whatever we saw on TV, we tried to replicate it ourselves as cricketers. And no doubt the Indian women's side, while stuck in quarantine, have been watching the test matches that have been going on. They are picking up so much. Remember that they did fly that chartered flight all that time ago to England at the same time. The conversations that the players would have had with each other, no doubt female players have taken things on board. But there is a real belief that I am seeing with this next generation of Indian women players. They are hungry. They love the contest. They don't care who they're coming up against. They really do believe they're good enough to win. My thing back to I guess maybe ways that they can improve. I'd love some consistency from a selection committee point of view, and the selections, each squad that comes out seems to be really different. Yet we never hear from the selection committee as to why they've dropped someone or why they've actually appointed someone. And it's something here that we do in Australia. The people that are in charge for giving that squad, they have to front up to the media. So moving forward, I'd love to see that. But once you get a bit more consistency, once you're able to get some more domestic cricket happening back in India, fingers crossed for this summer, you'll be able to keep producing and churning out wonderful players. But Indian women's side, and it's a fear amongst all other countries that if India get it right, they are going to dominate international cricket. Wow, important word from Lisa Sthalekar. Just to sort of go into specifics, we've dropped Indrani Roy and we have dropped Priya Punya without giving a single opportunity in the last tour. So that's what Lisa is alluding to. And again, I absolutely 200% echo what she said. Dinesh ji, जब ओवल के बाद वो 10 मिनट ब्रेक था मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के पहले, आप किसको चाहते थे मैन ऑफ द मैच? आप तो डिबेट कर रहे होंगे रोहित को दिया जाए कि शार्दुल को दिया जाए, दोनों ही आप ही का है, सोच रहे थे, बताइए सर। बेसिकली मैं सोच रहा था कि शार्दुल को ही मिले, क्योंकि शार्दुल के वजह से हम लोग मैच में आ गए थे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जो उसने 57 रन की पारी खेली थी, बहुत ही सराहनीय पारी थी, क्योंकि उस पारी की वजह से हम लोग 190 तक, क्योंकि वन टाइम हम लोग 122 से 7 विकेट थे, उसके बाद हम लोग 190 तक गए। उसके बाद उसने फर्स्ट इनिंग में विकेट निकाला जो रूट का, अगेन सेकेंड इनिंग में उसने 100 रन की पंत के साथ 60 रन की पारी खेली। उसके बाद उसने ब्रेक थ्रू दिया सेकेंड इनिंग में इंडिया को, जो रूट की विकेट निकाले। तो बट नेचुरल शार्दुल को ही मिलना चाहिए था। बट अच्छी बात है कि रोहित ने भी अच्छी पारी खेली थी, कि उस कंडीशन में बैटिंग करना बहुत डिफिकल्ट था।
विकेट पे स्टे करना जरूरी था। रोहित ने वो किया, स्टे किया, 100 रन की अच्छी पारी खेली। तो मैं चाहता था कि ये मैन ऑफ द मैच शेयर हो जाए। अगर शेयर होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, बट ठीक है, रोहित को मिला है, शार्दुल को, हमारे पास थी, उसका मैन ऑफ द मैच का प्राइज आ गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं वही बोल रहा था। और आप मुझे ये बताइए, अरविंद जी के पास जाने के पहले, जब इतना साल पहले आपने शार्दुल को अपने घर में रख के कोचिंग किया, सर ये हम लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए आपको या अरविंद जी को। ये आप नहीं जानते थे कि ये शार्दुल ठाकुर टेस्ट क्रिकेटर बन जाएगा, इंडिया के लिए जीत जाएगा। आपने तब किया जब वो कोई नहीं था। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये दिनेश लाड का कंट्रीब्यूशन, आपको क्या दिख गया था? आप क्या जानते थे कि ये टैलेंट है इसीलिए आपने किया था? आप मुझे थोड़ा सा आपका फिलॉसफी बताइए। बेसिकली जब मैंने शार्दुल को देखा, हमारे स्कूल के अगेंस्ट मैच खेल रहा था, उसमें उसने 78 रन की पारी खेली है, 5 विकेट निकाले थे। और उस वक्त मैंने उसकी बॉलिंग जो देखे थे, तो मुझे लगा था कि अंडर 15 एज ग्रुप में मुंबई में सबसे तेज वही लग रहा। क्रिकेट बहुत फॉलो करता है, क्योंकि स्कूल क्रिकेट में मैं ले रहा था, तो बहुत तेज डाला था उसने गेंदबाजी। तो मैं बहुत खुश हो गया था। जैसे मैच खत्म होने के बाद मैं उसे बुलाया, शार्दुल मेरे स्कूल में आ जाए, ऐसे मैंने कहा। तो अगर पेरेंट को मुझे कांटेक्ट करने वाला, तो फॉर्चुनेटली उसके पेरेंट यानी डैड वहां पर थे, तो मैंने इमीडिएटली डैड को बताया कि ये लड़का अगर मुंबई में आया तो बहुत अच्छे लेवल, नॉट कि इंडिया के लिए खेलेगा, बट टॉप लेवल का क्रिकेट खेल सकता है फ्यूचर में। तो डैड ने मुझे कहा, सर नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपके स्कूल में आने के लिए ऑलमोस्ट 3 घंटे की दूरी है, जाने के लिए 3 घंटा, आने के लिए यानी 6 घंटा मुझे उससे ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। और 10th में गया था। एजुकेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्रिकेटर नहीं बना तो एजुकेशन से कुछ आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने मना कर दिया था उस वक्त। तो उस वक्त फरवरी का महीना था। देन मैंने मार्च को उनको कांटेक्ट किया, 4-5 बार फोन किया, तभी भी वो यही कह रहे थे, सर थैंक यू, आप हमारे लिए बहुत इतना कर रहे हैं, बट फॉर्चुनेटली हम लोग नहीं सोच, क्योंकि 10th का भी उसका इंपॉर्टेंट ईयर है। उसके बाद मैंने अप्रैल में 10 बार फोन किया, वो भी तैयार नहीं थे। एक दिन मैं घर पे ऐसे वाइफ के साथ बैठा था, तो वाइफ को मैंने कहा कि एक लड़का है, उससे मतलब घर पे रख सकते हैं। तो वाइफ ने इमीडिएटली कहा कि आपका घर है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे उन्होंने कहा, मैं इमीडिएट शार्दुल के डैड को फोन करके बताया कि मैं मेरे घर पे रखना चाहता हूँ। तो भी थोड़ा शॉक हो गया कि एक बच्चा घर पे रखना बहुत बड़ी बात रहती है। तो मैंने बोला नहीं, मैं रख सकता हूँ, उसको स्कूल के लिए भी अच्छा पड़ेगा, घर के पास में स्कूल है, प्रैक्टिस भी अच्छा करेगा। तो ये बात हो गई शार्दुल, क्योंकि मुझे लग रहा था ये लड़का आगे जाके कुछ अच्छा करेगा, जिस तरह से उसने बॉलिंग डाली थी। Wow, great words. Lisa, I hope you understood what he said, because you understand Hindi, right? Yeah, I'll just still translate. What he said was, Shardul, when he saw Shardul at under 15 level, he realized this man has talent, and then wanted to have him as in his school. But unfortunately, the distance was 3 hours coming, 3 hours going. So total of 6 hours of travel every day. So Shardul's father refused, saying, how can this happen? I can't afford this. And we also want our son to have proper education. That's when Mr. Lad actually told his wife that can we have him in our house and get him to play cricket and be part of the school. Unreal stories. Arvind साहब ये बताइए, चेतेश्वर को ये पेन कैसे वो बेयर कर सकता है? बॉल बॉडी में लग रहा है, हम सब डर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उसको जितना बार चोट लगा, वो तो फिर भी इंडिया खेलते जाता है, फ्लिंच नहीं करता है। 200 बॉल 300 बॉल 7 घंटा 8 घंटा बैटिंग कर लेता है। आपने उसको ऐसे कैसे बना दिया हमारे देश के लिए, ये बताइए। तो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप रॉक स्टार हो हमारे लिए, रॉक स्टार हो। अभी बताइए कैसे बनाया उनको। एक्चुअली सर इसमें ऐसा है कि उसमें बेसिकली 2 चीजें है। एक तो वो चेतेश्वर सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। इंडिया की सिचुएशन ऐसी थी कि विकेट नहीं गिरनी चाहिए, तो वो उसने अगर वो ऊपर खेलता तो स्निक हो सकता और बैट एंड पे या ऐसा कोई केस जाता, इसलिए उसने वो जो भी गेंद आई वो अपने शरीर पे लिया है और वो नहीं खेला। दूसरा इज बेसिकली वेरी आध्यात्मिक है और फाइटर है। ये 2 चीज उसके लिए बहुत मायने रखती है। Wonderful. Kushan, when writing the book, I mean, obviously speaking to Dinesh Lad and speaking to Arvind Pujara were high points for you.
But give me another high point or two of your favorites from the book, because ultimately we are celebrating mission domination. Give me a Rohit Sharma story or a Rishabh Pant story. Come on, let's celebrate Rohit, Shardul and Cheteshwar Pujara more. Give me your favorite stories of these guys. One of my favorite stories, Arvind ji ने अभी बोला कि वो बहुत आध्यात्मिक लड़का है. He told me a story about like after Cheteshwar faced tragedy, he went to the Guruji and spent some time. What happened, we do not know. Even he doesn't know that, because it's a sacred thing between the Guru. हिंदी में बोलो, कुशान हिंदी में बोल. Let the come on हिंदी में बोल. मतलब एक चीज ये होता है, शिष्य के जो एक परंपरा होती है, उन दोनों में क्या बात होती है वो कोई नहीं जान सकता, सिर्फ गुरु और शिष्य जानते हैं. लेकिन अरविंद सर ने मुझे बोला था कि जब उनके मदर के डेथ के बाद चेतेश्वर जब गुरुजी के पास गए थे, उन्होंने एक हौसला दिया, तो उसके बाद he became a different person. उसका मेंटल स्ट्रेंथ और जो एब्जॉर्व करने की क्षमता है दुख, मतलब आई वॉज अमेज्ड with the story, and I would like Arvind sir कि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बताएं कि वो जो टाइम था, आपने मुझे बोला था कि उसने कभी एक आंसू नहीं बहाया है. मतलब मेरे लिए अमेजिंग है. मतलब ये कोई अगर हमारे जो दर्शक है वो अगर चेतेश्वर के फादर के मुंह से ये बात सुने तो उनको ये सच लगेगा. अरविंद जी बताइए प्लीज, बिफोर आई गो टू लिसा ऑन रोहित शर्मा. अरविंद जी. उसमें ऐसा है कि ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय है चेतेश्वर बेसिकली, और दूसरा मैंने बोला वो आध्यात्मिक भी है. तो आध्यात्मिक है, उसकी वजह से गुरुजी ने उसके पूरा समझाया कि देख पहले तेरी मदर थी तो सब तेरा ख्याल रखते थे, तेरा ठीक से टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, और सब चीज है जो अपना जो चीज है वो अपने को अपने हाथ से करना है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है. अभी पहले थी वो उसी टाइम वो उसकी मदर थी और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग और हो गया. पहले से ही स्ट्रॉन्ग था और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. Wow. Lisa, if I can come to you, you are one of the greatest cricketers of of all time. ICC Hall of Fame and all of it. You've played across the world in different conditions, and now as a commentator, take this as a cricketer and commentator. When you see a Rohit Sharma and the way he's now playing Test cricket, obviously he's a white ball great. Tell me about this Rohit Sharma that you are seeing batting in England. Your thoughts? Look, I mean, the fact that he scored his first Test 100 away from Indian soil, I mean, I was surprised to hear that stat, because you just know him as a free-flowing batter, so exciting to watch, because the game is always turned on its head because of him. I think for him, and he would probably be the only one to tell us, he seems like he's more comfortable and confident in his own ability. So things don't necessarily faze him. Well, I think when you first come in and play international cricket, you don't know what to expect. So you just go out and play. Then the expectation of where you are, who you're representing, what you're doing starts to weigh on you. The media starts to get behind you. The supporters, fans either love you or hate you. And there is a weight. And I think once you kind of get that over that 30 mark and you start to feel more comfortable within yourself, and if players can find that a lot earlier, they'll be safer. We're seeing him more relaxed. Here in Australia, we've got a prime example. David Warner was found through the T20 format and became one of, and still is one of our great Test players. So we don't have an issue as Australians seeing people come from white ball into Test cricket. I think the skills can absolutely be adapted. But it's more about understanding who you are, your game, and being able to kind of shake off the criticism or things that are thrown on you. So, mud doesn't stick to you, it just comes off. दिनेश जी, आपको तो ज्यादा पता होगा, सबसे ज्यादा पता होगा रोहित के बारे में. अभी लिसा जो कह रही थी, हम सबको ये देख के बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज्ड है हम लोग, रोहित ने जैसे बैटिंग किया है. आप रोहित से बात करते हो, आप जानते हो उसको. क्या आपको लगता था वो पहले से ऐसे कर पाएगा? क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है इंग्लैंड में, सचिन इज ऑन रिकॉर्ड. कल मैं सचिन से बात कर रहा था, परसों राधा, एंड इसे वो 2 नॉच ऊपर बैटिंग कर रहा है जैसे पहले करता था. आप जैसे रोहित को देख रहे हो इन इंग्लैंड? डेफिनेटली जिस तरह से रोहित अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, रोहित के बारे में ऐसे कहा जाता है कि सिर्फ
इंडियन सॉइल पे अच्छा बैटिंग कर लेता है, 100 वहां पर ही कर ले, बट उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाहर जाके आउट। बट आपने देखा होगा रोहित ने जब जब बैटिंग किए बाहर जाने, उसने विकेट फेंकी है, उसने विकेट पे अगर स्टे नहीं किया जाता। बट आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में जब रोहित गया था तब मेरी उससे बात हो गई, तो मैंने उसे एक ही बात कही थी कि रोहित तू अच्छा बैटिंग करता है तो हर मैच में 100 कर सकता है, क्योंकि तो ऐसे एक बल्लेबाज है, एक सेट होने के बाद तुझे आउट करना डिफिकल्ट है, तो तू विकेट पे तुझे स्टे करने की कोशिश करना। क्योंकि आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में उसने पहले 10-12 ओवर में विकेट पे स्टे किया, उसके बाद उसने जो 100 रन की पारी खेली उसका कारण वो है। और उसके बाद उसने उसके बारे में जो कहा जाता है कि उसके पास जाके खाली अटैकिंग बैटिंग करता है, बट उसने अपने को अलग एडॉप्ट कर लिया, उसने डिफेंसिव पे बैटिंग करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा उसके डिफेंस बहुत कॉम्पैक्ट है, यानी मैं दूसरे के बारे में नहीं बोल सकता, मैं जिस तरह से वो डिफेंस कर रहा है, अपने शरीर के पास डिफेंस बैकफुट पे कर रहा हो, फ्रंट फुट पे हो, शरीर के पास खेल रहा है, तो उसने बहुत अच्छी तरह से किया। और उसने सोचा कि अगर मैं विकेट पे स्टे करूंगा तो अच्छी तरह से बैटिंग होगी। आपने देखा होगा ये इंग्लैंड टूर में, इंग्लैंड नहीं उसके पहला भी ऑस्ट्रेलिया टूर में भी उसने 2 मैच में अच्छी पारी खेली थी, अनफॉर्चुनेटली खराब विकेट फेंक के आउट हो गया था। देन इंडिया में भी अच्छी पारी खेली टर्निंग ट्रैक पे, जैसे कि अहमदाबाद में उसने 160 रन की पारी खेली, वन ऑफ द आई एवर सीन। सो उसके बाद उसने अडॉप्ट करने लगा, उसके बारे में जो कहा जाता है ओनली वाइड बॉल क्रिकेट खेल सकता है, बट उसने बताया कि रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छा कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा कर रहा है। मैं चाहूंगा कि और 2-3 साल खेल के अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए। तो कुशान अरविंद जी से पूछेगा, उसके पहले एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। शार्दुल का बैटिंग क्या आप सरप्राइज हो गए हो? हम लोग तो सब सरप्राइज हो गए, जैसे बैटिंग कर रहा है, 100 भी कर सकता है। मैं पेपर में पढ़ रहा था, आपका कमेंट बना के दिखाएगा। शार्दुल के बारे में जरा बताइए। बेसिकली शार्दुल को मैंने जब भी देखा था कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छा करता, बट बैटिंग के ऊपर वो स्टे करना नहीं चाहता था। एवरी टाइम वो आके खाली अटैकिंग खेलना, बस उसको स्टे करने की ये नहीं देते, एग्रेसिव बैटिंग करता था। आपने देखा होगा रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छे उसने इनिंग खेले, उसके बाद आईपीएल में भी उसने अच्छे इनिंग खेले, हिट वनडे में भी उसने अच्छे, बट स्टे करने की कोशिश नहीं करता। तो मैंने एक बार उसको, जब वो इंजरी से बाहर निकला, बीच में इंजरी से था, तो बीकेसी प्रैक्टिस में आ रहा था, तो हमने उसके साथ 2-3 सेशन किए थे, थोड़े उसके स्लाइड ग्रिप चेंज किया, उसको एक ही कहा, देख शार्दुल तो अच्छी बैटिंग कर पाएगा, तो थोड़ा विकेट पे स्टे करना, जाके विकेट के ऊपर स्टे करेगा तो अच्छा बैटिंग करेगा। तो उसका एक फायदा क्या हो गया, ऑस्ट्रेलियन टूर में जब वो एज अ बॉलर करके गया था, उस टीम में नहीं था, तो उसने बैटिंग के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया, बैटिंग ज्यादा से ज्यादा बैटिंग करने चालू किया। बॉलर तो अच्छा था ही, बट उसने 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैटिंग की, तो उसके वजह से ये जो आप उसका परफॉर्म देख रहे हैं, उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा हो गया अभी। फिलहाल पहले से बैटिंग तो अच्छा ही कर रहा था, बट अभी टेम्परामेंट उसने अपना इंप्रूव करने की वजह से ये अच्छी बैटिंग कर रहा है। ओके कुशाल, तुम्हारा क्वेश्चन अरविंद जी से, मैं जानता हूं तुम्हारा 2-3 सवाल है, बट तुम पहले पूछो, फिर उसके बाद मैं लिसा से पूछूंगा अबाउट कैन दिस टीम इंडिया डोमिनेट लाइक द वे ऑस्ट्रेलिया वंस डिड। योर क्वेश्चन कुशाल। अरविंद सर, जब चेतेश्वर ने वो 91 रन्स का इनिंग्स खेला जो लास्ट टेस्ट मैच में, तो वहां से जो टर्न अराउंड हुआ, उससे पहले जब क्रिटिसिज्म हो रहा था, मतलब एक इतना हमने एक पॉजिटिव इनिंग्स खेला कि पहले ही 5-6 चौके मार दिया, 13 चौके 91, मतलब आपसे तो बात होती रहती है, तो प्लानिंग कैसे की, मतलब जो गेम में जो चेंज लास्ट 2 इनिंग्स में दिखा, वो जो चेंज है, मतलब आपको एज अ कोच आपको वो चेंज क्या दिखा? फ्रेंकली मैं बताऊं कि कहीं मुझे स्ट्रोक आया है, तो डॉक्टर ने मुझे मैच देखने का भी मना किया है स्ट्रोक की वजह से, क्योंकि उसमें स्ट्रेस आता है, डॉक्टर का मानना ऐसा है। तो ये जो पूरी जो इंग्लैंड की सीरीज है वो मैंने नहीं देखी। तो अरविंद जी ठीक है, तो आप ये सीरीज आपने नहीं देखा है, बट आप मुझे ये बताइए, चेतेश्वर फेलियर को कैसे डील करता है? प्रेशर आ जाता है, इतना क्रिटिसिज्म होता है, सब एक्सपेक्ट करते हैं कि सब समय वो 2018 जैसे बैटिंग करेगा। 2018 जैसे बैटिंग कैसे हर कोई हर दिन कर सकता है? वो तो ही वाज प्लेइंग लाइक, वो जो जॉश हेजलवुड का कमेंट है कि मैं सोने जाता था तो सोचता था अगला दिन फिर चेतेश्वर को बॉलिंग करना पड़ेगा, वो नाइटमेयर बन चुका था सारे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के लिए। बट वही चेतेश्वर को जब क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, आप मुझे ये बताइए वो कैसे डील करता है? प्रेशर को कैसे डील करता है? फेलियर को कैसे डील करता है? बेसिकली वो चीज उसपे ऐसे है कि वो पहले पहला रीजन तो आध्यात्मिक,
जो चीज होती है होने वाली है, उसमें आप कुछ कर सकते हैं। आपके पास है जो होना चाहिए, जो आपके आपके बस में है। जो आपके बस में नहीं है उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, उसका फोकस रहता है वो और बॉल पे। उसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्मेंस, फोकस की वजह से वो ही इज वेरी फोकस्ड प्लेयर। Okay, okay. So you're talking about this focus and sort of what he controls and controls the controllables. Lisa, one fellow who has obviously divided the cricket world is our captain. Shane Warne calls him the best thing to happen to Test cricket. Fox Sports calls him classless. Where does Lisa Sthalekar stand on this? Is Virat Kohli important for Test cricket? In what way? In what not way? Your take on Virat Kohli, candidly. I think he's hugely important to the survival of Test cricket. I think he's played an important role in revitalising maybe Test cricket in India because he is that passionate about playing red ball cricket. You can see that. You can see the intensity he brings when he does play Test cricket. It is, as we all know, it's the ultimate format. It's the one that challenges players more than any other format. And the best players wanted to mark themselves against it. Shane Warne likes him. Most Aussies don't mind him because I actually think he plays like an Australian. He doesn't mind getting in your face. He doesn't mind using the advantage of the crowd. We see it all the time where he's kind of jeering the crowd to get behind him. I think that's really important. He inspires a lot of people with passion for India and playing cricket at the highest level. So I think he has been one of the best things for Indian cricket, but also for Test cricket. I might be having internet issues, Kushan. You take it on from here. I'll rejoin this link in a second. Yeah, you heard me there. Yeah. I was having internet issues. Kushan, your question for Dinesh ji. Yeah. दिनेश जी के लिए मेरा एक क्वेश्चन है जो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो बुक में शायद नहीं है लेकिन जुड़ा है रोहित शर्मा से कि आपको शायद याद होगा दिनेश सर, आप वो स्टोरी अगर हमें बताए कि रोहित शर्मा को जब आपने पहले देखा था और आप चाहते थे कि वो स्वामी विवेकानंद स्कूल में आए तो स्कूल का फीस देख के रोहित शर्मा के अंकल आपके पास आए थे और बोले थे कि सर इतना फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने बोला था कि नहीं, इसको सिर्फ क्रिकेट खेलना है। जरा वो स्टोरी अगर आप हमें बताएं, मतलब जब उन्होंने बोला था कि हम ऐसा स्कूल फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। बेसिकली जब रोहित को मैंने देखा था मैच में देखा था, 10 ओवर्स की मैच थी, 12 साल का था। जैसे मैच खत्म मैंने उसको बुलाया, उसको पूछा कि नाम वगैरह पूछा तो कहा कि अगर तुम्हारे मम्मी डैडी है तो मुझे मिलने बोलना। तो मम्मी डैडी वहां पर नहीं, वहां यहाँ से बोरोली से ऑलमोस्ट 3 घंटे की दूरी पे रहते थे। तो उन्होंने ना मुझे बोला कि उसने कि मेरे अंकल है यहाँ पर, अंकल को बुलाना। ठीक है, बुलाना। अंकल को मैंने बोला कि आपका भांजा मुझे अच्छा लगा है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप स्कूल में लेके आइए, मैं एडमिशन करवा देता हूँ। जैसे 2 जून को स्कूल में लेके आए, फॉर्म ले लिया डायरेक्टर सर से, फॉर्म पे साइन वगैरह डायरेक्टर से इमीडिएटली कर दिया, डोनेशन फ्री कर दिया। जैसे नीचे आए तो मुझे उन्होंने क्वेश्चन किया फीस कितनी है। मैंने कहा तू देखते हैं फीस। तो 275 रुपीज फीस थी। 275 सुनने के बाद इमीडिएटली उन्होंने मना कर दिया, बोले सर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, 270 हम लोग भरी नहीं। जिस स्कूल में अभी जा रहे हैं 30 रुपीज फीस है, 270 हम लोग एफर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोला 2 मिनट के लिए रुको। मैं इमीडिएटली आई गॉन टू डायरेक्टर अगेन एंड उनको कहा कि सर आपने जो अभी फॉर्म इश्यू किया है, आपने एडमिशन दे लिया है, बट एक इश्यू है। मतलब कहा, बोलो ना क्या है। बोला सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसको आप फ्री शिप दीजिए। तो पहला लड़का था जिसके लिए मैंने फ्री शिप पूछा था। तो डायरेक्टर सर शॉक हो गया, लड़के के लिए फ्री शिप। मतलब क्यों इतना? मैंने सर लड़का गरीब है, टैलेंटेड है, हमारी स्कूल नहीं है, स्कूल के लिए अच्छे बच्चे भी चाहिए, तो दे दीजिए। तो इमीडिएटली उन्होंने ग्रांटेड फ्री शिप। अगर वो ग्रांटेड फ्री शिप नहीं होता तो मैं भी रोहित शर्मा दुनिया को नहीं दिखाई देता, ऐसे मुझे लगता है। Lisa, I must translate this story for you. Please. So Kushan asked Dinesh ji that when Rohit went to get admitted into the school, and Mr. Lad actually went and requested the principal to give him a free studentship.
because the fees of the school at that point in time was 275 Indian rupees. Now, Rohit used to go to a school which had a fees of 30 rupees. So obviously his parents weren't in a position to pay 275. And the moment they heard that fees, they went to the counter and they said, no, we can't admit Rohit here. We can't afford this. And they were about to leave. And Mr. Lad said, give me 2 minutes. He rushed to the principal and he said, it's the new school. This guy is supremely talented. Yes, we may not be rich. Allow him a free studentship. And he said, had the principal not consented, maybe we would not have seen Rohit Sharma in this cricket world. What a story. What a magical story. अरविंद जी, मुझे आप ये बताइए, आप जब चेतेश्वर को बड़ा कर रहे थे, आपको क्या लगता था वो चेतेश्वर पुजारा सेकंड वॉल ऐसे बन जाएगा, ऐसे खिलाड़ी बनेगा कि भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री में उसका नाम हर समय लिया जाएगा? आपको क्या ये लगता था उसमें इतना टैलेंट, इतना हुनर, इतना पोटेंशियल है? एक्चुअली मेरी वाइफ ने मुझे 2-4 फोटोज दिखाए. उसमें चेतेश्वर के 2 फोटो था. जब वो 2.5 साल का था, 2.5 साल का जब था, तो वो जो उसमें वो 2.5 साल के लड़के को आप सिखा नहीं सकते क्रिकेट. तो उसमें जो बॉल था, वो उसकी बॉल जो उसके बैट में जो आ रहा था, वहां तक उसने वॉच किया था. पहला वो फोटो में वो देखा. एक दूसरा फोटो था, उसमें वो पैर से अप होके डिफेंस कर रहा है, वो देखा. तो मैंने सोचा कि ये इसमें बेसिकली टैलेंट है, क्रिकेट दोनों चीज है, वो क्रिकेट रिलेटेड है. और 2.5 साल के लड़के को आप सिखा नहीं सकते, वो तो नेचुरल होता है. तो ये देख के मुझे लगा कि ये बराबर है. फिर बाद में मैंने सोचा, मेरे को लगा कि मैं उसका फादर हूँ, शायद ऐसा लगे मुझे कि ज्यादा इम्पोर्टेंस में दे रहा हूँ, मेरा लड़का है इसलिए. तो मैंने फिर करसन घावरी को फोन किया और उसका परमिशन मांगा. मेरा एक लड़का है, वो क्रिकेट खेलता है, और आप उसे जरा देख लो, आपको कैसा लगता है, और उसके पीछे मेहनत करने की जरूरत है कि या नहीं है. मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि मैं उसका फादर हूँ. फिर उसने उसी टाइम वो भारत पेट्रोलियम में, मैं उसके पास गया. उसने 2-3 घंटा समय बिताया. फिर वो बोले कि नहीं, लड़के में दम तो है. तो हमने वो क्रिकेट सिखाना शुरू. Okay, so I'll translate that also because that's another great one. So Cheteshwar was 2.5, Lisa. So anyone of the audience who finds it difficult for Hindi to get Hindi, so he was 2.5 years old, and that's when he Arvind ji is saying the way he batted. Obviously, you can't teach a 2.5-year-old kid. So clearly, he was a natural, and the way his hands were going up and the way he was playing cricket, he thought that, okay, this guy must be interested in this. And then he started teaching him and he felt, maybe I'm sort of saying this because I'm his father. So he approached former India cricketer Karsan Ghavri to check if Cheteshwar actually had talent. And that's when Karsan Ghavri checked on Cheteshwar. And obviously we have Cheteshwar Pujara. So that's the story. I'll open it up to questions. First one for you, Lisa. The question is from Stuti, and 5 of our questioners get Tata Click vouchers as well from Aul, Rima and others from our team. Lisa, share your experience as a commentator. How has it changed inside the commentator's box with more and more women stepping in? Well, I don't know what it was like without us there because obviously I wasn't there, but certainly I've been welcomed in the commentary box by fellow male commentators. I think, and to be honest, BCCI needs to be credited for this because they were leaders in the game back in 2015 when the 4 of us females came in and started commentating in the IPL. Women weren't really regularly seen. And to be seen in the biggest T20 competition in the world sent a strong message. So credit to BCCI for that. I think what it has done is it's probably replicated what's happening in the living room, that there are males and females watching the game, talking about it, scrutinising the players, what they do, and it's nice to probably hear
similar conversations in the commentary box. It also has probably made sure that our male commentators are very careful about the language that they use when they commentate, because there are young girls that are watching. And when, you know, as commentators, we always say maybe batsman or man of the match or fieldsman, you know, we're almost disrespecting one half of the population. So with us in the commentary box, maybe it's made them realise there are gender neutral terms that quite happily describe exactly what is happening without using the gender. So player of the match, everyone's a player on the field, so you don't need to chop and change. So I think language has been a really huge thing, and no doubt that has made it more inclusive for everyone watching. Excellent answer. And that's what we were also seeing in Tokyo with the Paralympics. 15% of the world. That's why the movement, we unite, the fight for respect, that 15% of the world, people with disability. We've seen how our Prime Minister interacted with the Paralympians today. We've seen what India is going through with 19 medals. That is the revolution that we want. And this should not stop with medals. It has to make a change in society, the point that Lisa Sthalekar is just making. Dinesh ji, question for you before I go to Arvind ji and Kushan with a question each. Dinesh Lad, what are the key traits you see in a young player before you take him under your wing? This is from Soumya. जब भी मैं बेसिकली छोटे बच्चों को कोचिंग ज्यादा करता हूँ, मैं देखता हूँ कि बच्चा के एक्शन कैसे, बॉलिंग डालने के एक्शन कैसे है, या बैट, जैसे चेतेश्वर के बारे में इन्होंने सोचा था, वैसे मैं देखता हूँ बैट कैसे पकड़ रहा है, होल्ड कैसे कर रहा है, कैसे ड्राइव कर रहा है, उससे वहां से ही मैं उनको चूज करता हूँ। और अच्छा टैलेंट होगी तो मैं उनको बोलता हूँ, उनके पेरेंट को बोलता हूँ कि आप क्रिकेट चालू अगर, अदरवाइज क्रिकेट इज टोटली, अगर आप क्रिकेट के पीछे लोगोगे तो, क्योंकि आपने देखा होगा करोड़ों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें से 11 बच्चे देश के लिए खेलते हैं। तो मैं अगर टैलेंट हो तो उनको सजेस्ट करता हूँ, अदरवाइज मैं उनको ना बोलता हूँ, मना करता हूँ क्रिकेट के लिए। Boria, I would just like to interrupt, and Dinesh sir could tell us that there are parents. We know we have seen a lot of pushy parents around in cricket academies. They come to Dinesh sir and say that in what duration of time our kids can play IPL, and Dinesh sir has an answer for them. दिनेश सर, अब जरा बताइए, जो आपको बोल रहे कितने साल में मेरा बेटा आईपीएल खेलेंगे, आप उनको क्या बोलते हो? प्लीज टेल अस। बेसिकली क्रिकेट अभी प्रोफेशनल हो गया, क्योंकि क्रिकेट में बहुत पैसा आ गया, तो हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बने, मेरा बच्चा इंजीनियर नहीं बने, लेकिन मेरा बच्चा अगर क्रिकेटर बन गया तो आईपीएल से करोड़ रुपए कमा के लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए आजकल इतना ट्रेंड हो गया आईपीएल की वजह से, हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा क्रिकेटर ही खेले, लेकिन वो बच्चे के अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए, पेरेंट को नहीं समझते। बहुत सारे कोचेस उसको मिसगाइड करते हैं, आपका लग रहा है फ्यूचर में जाके आईपीएल खेलेगा, नॉट फॉर कंट्री, देश के लिए खेलेगा, ऐसे नहीं बोलते, आईपीएल खेला तो पेरेंट भी खुश हो जाते हैं, तो पेरेंट उसके पीछे लगते हैं। लेकिन मैं पेरेंट को हर वक्त एडवाइस करता हूँ कि क्रिकेट में अगर डालते हो, टैलेंट हो तो डालो, नहीं हो तो मत डालो, बिकॉज कि अगर क्रिकेट में अगर बच्चा अच्छा नहीं करे तो आप डिप्रेशन में जाते हो, और बच्चा भी डिप्रेशन में जाता है, तो आप मत करो। तो पेरेंट का आजकल इन्वॉल्वमेंट बहुत हो गया कि घर पे जाके आजकल टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि बच्चों को कैसा क्रिकेट सिखाया जाता है, कोचेस बाजू में लेके बैठ के उनको क्रिकेट सिखाते हैं, तो पेरेंट शाम को जाके बच्चों को बोलते हैं, आज तेरे कोच ने ऐसा खेलने बोला है, वैसा खेलने बोला है, पेरेंट कंपैरिजन बहुत करते हैं। तो मैं पेरेंट को बहुत समझाता हूं, लेकिन आजकल पेरेंट नहीं सुन रहे, उनकी एक ही ख्वाहिश रहती है, मेरा बच्चा जाके आईपीएल खेले। That is the aspiration. That is the aspiration that every kid now has in India to play the IPL. Arvind ji, this is a question for you from Asim. Exactly on same lines. वो पूछ रहा है कि आपको डर नहीं लगा कि चेतेश्वर अगर इंडियन टीम के लिए नहीं खेलता है, आप दूसरा करियर, आपको कभी लगा था कि नहीं दूसरा करियर कर ले, कोई दूसरा कुछ कर ले, पढ़ाई कर ले, एक करियर हो जाएगा, क्रिकेट में मैं डाल रहा हूँ, आप कभी ये डाउट में आपका दिमाग में नहीं आया? एक्चुअली मेरे दिमाग में वो डाउट नहीं आया, क्योंकि वो बचपन से वो उसके पास अच्छी टेक्निक थी। उसका दूसरा मैंने ओपिनियन भी लिया था कि भाई ये बच्चा है, उसके पास क्रिकेट खेलने का स्किल है, तो ये सब चीज उसमें थी, तो उसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि ये क्रिकेट खेले तो अच्छा है, लेकिन कहाँ तक खेलेगा वो मैंने डिसाइड नहीं किया।
Okay. Lisa, this is for you. Question on Shefali Verma. The impact that Shefali Verma can possibly have on the game. Domination, but do we think that the Indian team can ever dominate like the way the Australians did? Your take on that? Absolutely, why not? This is once in a generation Indian team, and the kind of bowling attack. Yes, we have had a Kapil Dev, we have had a Javagal Srinath, we have had a Zahir Khan, but tell me, when in Indian cricket we have had four such good quick bowlers, once in a generation quick bowlers? You'll not find them once they're out of the sea. Ishant Sharma, Mohammad Shami, Jasprit Bumrah, what a talent. And then you have Shardul Thakur, who is also shaping up well. You have Mohammad Siraj, who is shaping up well. So Umesh Yadav, who has not played a test match abroad for at least 2 or 3 years and comes and takes 6 wickets. So when you have this kind of a bowling attack, and if we dream of dominating, it's not a far-fetched dream, I don't think. And to top it, we have a batting lineup where we talk about a captain who is out of form. But tell me, before he's getting out, is he looking out of form? Virat Kohli. Every time he's scoring those 40s, you think that there is 100 round the corner. Then there is one ball that's getting him out. But is he looking out of touch? He is not. So this is the kind of team that we have. That even the captain, when he's not scoring 100, we're talking about hundreds over here. So this kind of an aspirational team we have. So why not? Why can't we dominate? And if we're winning the series in England, if we're winning in Australia, then how can we say that we can't dominate? Mission domination is absolute reality. Okay, somebody from the back end, I think the screen has changed, so if you could kindly shift that. But this question, I will again take it to Lisa. Has T20 skills in batting and bowling dominated the other forms, leading to a decline in test match batting, Lisa? I guess we're talking about men's test cricket here. Yeah. That's the question. I've just read it out for you. Yeah. So yeah, I think certainly when you're playing so much white ball cricket, the ball genuinely doesn't move around too much. It doesn't swing. It doesn't nip around. It's not as much grass on the pitch, and the spinners may not turn the ball as much. And because of that, as we call it in Australia, you play on, flat tracks and you become a bit of a bully. But can you actually accomplish and be able to survive those difficult sessions when the ball's swinging, when it's turning square? Can you do that? I think the more test cricket you play, the more you're exposed to those experiences. But international cricket in the calendar is they chop and change regularly, so it is tough being a player that plays multi-formats. Those that play just the one format, like Pujara, obviously his record is outstanding, and he's been able to really be the linchpin of that Indian side amongst the flair of everyone else. Okay. There's a question I'll take. This Sriram Srinivasan says domination seems to be a misnomer. Cricket is played by a handful of nations. Would have been more apt if we dominate in sport, example soccer, played by many nations. Are we not glorifying? Let me answer that. If you go to the United States, they call the World Series of baseball, which is played by that one country. If you go to the United States and take a look at NASCAR, that is a sport that is played by the United States, and we've seen what goes on. If we actually see world cricket, and if you see the number of associate nations that are now part of the ICC, there are close to 100 nations, if not more. We are good at it. That's why we are the top 5 or the top 6 or the top 2 or the top 3. We too play soccer. But we are the 100th team in the world trying to qualify out of the 200. So, I would say something very significant here. Be proud of the achievement of this particular cricket team. And there is 1 billion people who aspire to be a Virat Kohli sport. To say, soccer is a sport that is to be considered a sport, and cricket is a sport where domination is a misnomer, I think is a very pejorative, negative, cynical, sarcastic way of looking at the world, and that is fundamentally different to my life view. That is
fundamentally different to my life view, and that is the point that I want to put across to this particular question. My last 3-4 minutes on the show, Lisa, we're talking about mission domination. I asked this question of Sourav Ganguly. We've announced our team yesterday. Do you think we have a chance? We've not won an ICC trophy. Dinesh ji, ये same सवाल आपसे पूछूंगा, अरविंद जी से भी पूछूंगा, और कुशान से भी. Do you think, Lisa, we have a chance in this particular World Cup? Absolutely. Simply because, firstly, you're coming straight off an IPL, so all players would have played a lot of cricket on those conditions. And I think, you know, you've really positioned yourself from a white ball format to be able to have so much depth. So really the difficulty is selection. Who do you select against that opposition? How do you get the right combination of bowlers, the batting order, even, you know, as the game keeps going, who you're going to throw up? That's where the game will be won or lost. You definitely have the skills, the talent, and probably one of the more talented teams going around. But the thing is getting those combinations right. And can we make the final? I know Australia looks unbeatable. Can we make the final of the next year's tournament? I mean, Mithali Raj, Jhulan Goswami's signing off moment. But they will give everything for that final trophy. Your thoughts on India in New Zealand? Yeah, speaking both to Mithali and Jhulan, that this is their last thing they need to tick off the list. They've achieved so much as individual players. How they go against this Australian team this series will give a huge indication whether they can compete and be in that final. I think they've got the ability. I think there's probably still a few players that are sitting at home in India that could potentially come in to the side to strengthen it. And if they were to do that, I think they'd go very close to making the final. Okay. Arvind ji, एक question है, आप ले सकते हो ना भी ले सकते हो. ये सत्यव्रत पूछ रहा है that ये जो चेतेश्वर के बारे में बोला जाता है about slow batting, ये batting, वो batting, ये सब लेके आप में से बात होता है कि आप ये उसका ये माइंडसेट में आप ये बात करते ही नहीं हो. ये जो बाहर का जो नॉइज है कि जो स्लो बैट कर रहा है, इंटेंट नहीं है, ये लेके आपके साथ कभी उसका बात हुआ है? वो एक्चुअली गलत आक्षेप है लोगों का देखने का. जो वो जो खेलता है चेतेश्वर, वो जो टीम की जो सिचुएशन रहती है, गेम की जो सिचुएशन है, वो हिसाब से खेलता है. वो सबको मालूम नहीं है, इसलिए वो उसकी कमेंट्स करता है. लेकिन वो कमेंट्स को प्लेयर को अपने दिमाग में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए. मैं भी बता दूं, बिकॉज मैंने इस क्वेश्चन सत्यव्रत आपको बता दूं, मैंने इस क्वेश्चन लेके सारे प्लेयर्स से बात किया है और सारे प्लेयर्स हमें ये बोल रहे हैं कि चेतेश्वर पुजारा हमारे टीम के लिए क्या कर सकते हैं वो हम जानते हैं. शायद आप लोग बाहर नहीं जानते हो, इसीलिए आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हो. 2018 का ऑस्ट्रेलिया सीरीज चेतेश्वर पुजारा अगर नहीं खेलते, भारत नहीं जीतता. मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, नहीं जीतते हम लोग. 2021 का सीरीज ऑस्ट्रेलिया में अगर चेतेश्वर पुजारा खड़ा नहीं रहते, हम नहीं जीतते. मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं. अगर लॉर्ड्स टेस्ट मैच हम जीते तो वो अजिंक्य रहाणे चेतेश्वर पुजारा का वो इनिंग्स हमारे लिए, वो जो 50 बनाए 250 बॉल खेल के जब 55 पे 3 हो गया था, हम नहीं जीतते. सो जब हम ये कमेंट्स करते हैं, थोड़ा सा सोच के कमेंट्स करना चाहिए कि कैसे क्या योगदान रहा है इन प्लेयर्स का टू मेकिंग मिशन डोमिनेशन. दिनेश जी, आप ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, कैन दिस टीम विन द वर्ल्ड कप? आप कोच हो, आपका एक अलग नजरिया है, बताइए. बेसिकली हमारी टीम अच्छी है, जैसे कि इन्होंने बताया कि वर्ल्ड कप टीम बहुत अच्छी बनी है हमारी, और आईपीएल खेल के वहां पर ही खेलने वाले हैं. बेसिकली आपने देखा होगा कि वहां पर विकेट थोड़ी स्लो हो जाती है बाद में. तो स्पिनर्स का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि हमारे पास अच्छे ऑलमोस्ट 6 या 7 स्पिनर हमने लिए हैं. तो स्पिनर्स का बहुत बड़ा योगदान होगा. शायद हम लोग स्पिनर्स के ऊपर मैचेस जीत सकते हैं. और बैटिंग लाइनअप तो हमारे पास अच्छी है. रोहित है, राहुल है, विराट कोहली है, ऋषभ पंत है, ईशान किशन बहुत ही अच्छा. सूर्य कुमार यादव को भी एक अच्छा मौका मिला है प्रूव करने के लिए. सूर्य कुमार यादव अच्छा कर रहे हैं, आईपीएल में उसने अच्छा किया. तो मुझे लग रहा है कि हम लोग को चांसेस बहुत ही अच्छे वर्ल्ड कप जीतने के.
Kushan, last question to you. अगर वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, इंग्लैंड सीरीज जीत जाते हैं, are we writing a sequel to Mission Domination? You tell me, and I believe Shayantan should tell us. But seriously, that sequel is possible. Look, at the end of the day, India will have to win 2 matches. In this Indian team, with the kind of group that we have, we'll go to the semi-finals. It will be like it will be a real surprise if they don't reach the semi-finals with the kind of grouping that we have. And from there, it's about 2 matches. But yes, I would have loved to see. I was talking to you yesterday after the team. I would have loved to see Yuzi Chahal in this team. That is something that has disappointed me, and absence of Yuzvendra Chahal. Okay, I'll finish off there. It's been a riveting 1 hour. When time flew past, no one had an idea. Mission Domination. We love doing the book because there are inputs from several people, talking to people, collating these backstories. And what a privilege it was. Saurav Ganguly not here now, but what a privilege it was to have him unveil and take some questions. Lisa Sthalekar has never said no to me, and I'm putting that on record. I've asked unreal favors, and she's always been kind. Again, she was today. I look forward to her commentary, one of the most perceptive, one of the most interesting commentators going around at the moment, and what a player she was. Arvind, Pujara, sir, very proud that you came here. आप आए, हमारे साथ बातचीत किया. चेतेश्वर जितना कंट्रीब्यूशन भारतीय क्रिकेट में किया है, ऑब्वियसली आपका योगदान हम कोई भी भारतीय आपका योगदान कभी नहीं भूल सकता है. उसके लिए सबके तरफ से आपको थैंक यू वेरी मच. दिनेश जी, योर वर्क इज स्टिल ऑनगोइंग. रोहित और शार्दुल तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं, इसके बाद भी बहुत लोगों को आप हमें दोगे. सो मोर पावर टू यू एंड टू योर कोचिंग. खाली भाभी से कहिएगा और घर में किसी को लाने के पहले अभी तो रोहित और शार्दुल को बोलिए एक दिनेश लाड एकेडमी के लिए एक हॉस्टल बना है, बहुत पैसा कमा लिया है, आपके लिए ये करेगा अभी. रीमा, हरीश, अतुल, जया, everybody, thank you very much. Kushan, it was a pleasure working with you on the book. Trust you me. Before It's all mine. Before ending, I have to say something. हाँ सर बोलिए. Chiteshwar, Arvind Pujara and we are working for same employer, Western Railway. अरे वाह, ये नहीं जानता था. Wow, fantastic. And my other takeaway from this evening's function is Kushan's hairstyle. It's much better compared to what it was last week. So Kushan seriously has improved. Lisa is still in quarantine. What a world this is. Thank you very much, everybody, for joining in. Riveting discussion. Thank you very much. Thank you. Thank you so much from Tata Literature Live. Dinesh ji, Pujara ji, आपको शत धन्यवाद. आप लोग इंस्पिरेशंस हैं. इतने सारे, जैसे आप लोग ने कहा, करोड़ों बच्चे आना चाहते हैं और वहां पर 10 या 12 लोग को ही मिलता है, तो उसके लिए धन्यवाद खूब आप लोगों को. Thank you, Lisa, for making the difference in the gender neutrality of bringing into the commentators box and to the game. It's absolutely wonderful, and we hope to see this across all the sports. Saurav Ganguly, sir, for unveiling the book. And of course, both to you, Boria and Kushan. I actually want to know the list of books you have ready, all set in your mind that you all are going to be writing, because what I really enjoyed are the personal journeys you are bringing to the fore. You know, everyone only sees the success. They don't see what has gone behind, and all your conversations here bring that out. So thank you so much for writing what you all do, and absolutely riveting conversation what you just said. So on behalf of all of us, thank you so much. And for all our audience, just to bring to your mind once again that the Tata Literature Live, our annual literature festival, will be held online from November 18th to 21st. So do watch out for all our announcements. Until we meet again, thank you once again, and do stay safe. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Goodbye.